So very good evening to all. ଯେମିତି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ତମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ରୁ 3 ମାର୍କସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ବଟ୍ ପ୍ରାୟର ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯିବ, ତ ତମକୁ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିକଜ୍ ତମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ବି ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ ନ କରିକି ଯଦି ନ ବୁଝିବ ଏଇଠି ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍, ତମକୁ ମନେ ରଖିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପିଓର କନସେପ୍ଟ। ଗୋଟେ ପିଲାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେତେ ଅଛି ତାହେଲେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ରୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହଉ ଯେ ହଁ ସେ ପିଲା ଯଦି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରୁଛି ତାମାନେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ପିଲା ତମେ ଘୋଷିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ବି ଲେଖିଦେଉଛ। ବଟ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛ ଆଜି, କେୟାରଫୁଲି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ର ଆନାଲିସିସ୍ ଟିକେ ଦେଖିବ ଏଠି। ଓକେ? within a short span of time ଯେତିକି ତମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ ମୋଷ୍ଟ ପସିବୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆମେ 2 ରୁ 3 ମାର୍କସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଆଜି ଏଠି ଡିରାଇଭ୍ ତ କହିବିନି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ର ଲିଷ୍ଟ ବି ତୁମକୁ ଏଠି ଦେଖିଦେବି। କେୟାରଫୁଲି ଆଜିକା କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଆନାଲିସିସ୍ ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିବ। ମୁଁ ଯଦିଓ ତୁମକୁ କହୁଛି 2 ର 3 ମାର୍କସ୍ ଦେବି ବୋଲି, 2 3 ମାର୍କସ୍‌ର ମ୍ୟାଟର୍ ନୁହଁ। କିଛି 1 ମାର୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମିନିମମ୍ 10ଟାରୁ 15ଟା ଲେଖା ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବି। ତ ତୁମେ ଓଭରଅଲ୍ କହିପାର 1 ମାର୍କ, 2 ମାର୍କ, 3 ମାର୍କ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ରହିବ 2 ମାର୍କ ଆଉ 3 ମାର୍କ ଉପରେ। 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ କହିଦେବି। ତ ଲିସନ୍ କେୟାରଫୁଲି। କେୟାରଫୁଲି ଆଜିକା କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଲିସନ୍ କଲେ ହିଁ ତୁମେ କିଛି ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ତୁମକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ସ ମିଳିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପଡ଼ିବ। ଓକେ? So we'll start from chapter semiconductor because ଏଇଟା ଗୋଟେ one of the most easiest chapter because ଏ chapters ରେ ଆମର କେବଳ ହ୍ୟାଲୋ ସେ ଭଏସ୍‌ଟା ଅଡିବୁଲ୍ ହେଉଛି କି ରେ? ଓକେ, ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଫୋକସ୍ ରହିବ 2 ମାର୍କସ୍ 3 ମାର୍କସ୍ ଉପରେ। ବଟ୍ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମକୁ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମିନିମମ୍ 10ରୁ 12ଟା ଲେଖା ମୁଁ ଏଠି କହିଦେବି। ତୁମେ ବେସିକଲି କହିପାର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ? ବଟ୍ ୟୋର୍ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିକଜ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଠି ଆଟେନ୍ସନ୍ ନ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବନି। ଓକେ? So I am starting with a chapter semiconductor. I have started with semiconductor. ତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସେ? କିଛି 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଦେଉଛି ତୁମକୁ ବେସିକଲି। 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଭେରି କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡାୟୋଡ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହାଫ୍ ୱେଭ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର। ହାଫ୍ ୱେଭ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟରରେ କେତେଟା ଡାୟୋଡ୍ ଥାଏ? ତମେ ଯଦି ହାଫ୍ ୱେଭ୍ର ସର୍କିଟ୍ ଡାୟାଗ୍ରାମକୁ ଦେଖିବ କ୍ଲିୟରଲି 1 ଡାୟୋଡ୍। ଯଦି ଫୁଲ୍ ୱେଭ୍ ରେକ୍ଟିଫାୟର କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ 2 ଡାୟୋଡ୍ସ। ଓକେ? Another question, whether the p type semiconductor or n type semiconductor କିଛି ବି ପଚାରୁ ସେ ଅପସନରେ ଦେଇଥାଏ the p type semiconductor is dash positively charged, negatively charged, neutral, all of these. So clearly mane rakho whether it is p type or n type, the answer is both are electrically. Another one question, what is the majority charge carrier in n type semiconductor? For n type semiconductor, majority charge carrier is electron and minority charge carrier is hole. But for p type semiconductor, majority charge carrier is hole and minority charge carrier is electron. So these are few questions बहुत frequently आसे डिस्कस करदेली। वर्तमान जीवा डायरेक्ट आमर कोर क्वेश्चन पाखु जोटा आमर ऑलरेडी 2 मार्क 3 मार्क रे आसुची। तो प्रथम क्वेश्चन जोटा तमर आसुची से क्वेश्चन होची व्हाट इज जंक्शन डायोड। केयरफुली क्वेश्चन को नोट डाउन करथुबो। व्हाट इज जंक्शन डायोड? ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर फॉरवर्ड बायस।
This is a 2 mark question. Question pacharla, what is junction diode? Draw circuit diagram for forward bias. ଯେତେବେଳେ junction diode ପଚରା ହଉଛି, what is junction diode? A junction diode is a germanium or silicon crystal which is doped in such a manner that one half portion acts as p-type semiconductor and other half part acts as n-type semiconductor. Is called junction diode. This is the last point. Again, I repeat kar douchi. Junction diode is a silicon or germanium crystal which is doped in such a way that one half portion behaves as p-type semiconductor and other portion behaves as n-type semiconductor. So p-type और n-type circuit diagram टा केमती तमर block diagram को हाउ ये डायग्राम टा एक्चुअली बेले बेले तमर मोस्ट ऑफ द मॉडल आंसर रे भी भूल भाल देइची तो ये डायग्राम टा को केयरफुली बुझिबो दिस इज पी टाइप एंड दिस इज एन टाइप दिस इज पी टाइप दिस इज एन टाइप डायग्राम केमती रहिबो ना एन टाइप रे हमर प्लस गुडा को रहिबो प्लस ऊपरे ओपन होल्स रहिबो लाइक दिस एंड पी साइड रे नेगेटिव रहिबो सर्कल भितरे एंड ऊपरे हमर पैक्ड सिंबल रहिबो is the diagram of PN junction. It is PN junction diagram. Okay, you have to draw this one. पचारिछि मते कंडीशन कोन ना फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस रे आमे जानिचु मोर P टाइप रे लागिबो पॉजिटिव टर्मिनल व्हिच इज ए फिगर 1. N साइड रे लागिबो मोर नेगेटिव टर्मिनल व्हिच इज ए स्मॉलर 1. So this is the diagram. This is the diagram. Okay. तो एटा होची तमरो फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन रो फॉरवर्ड बायस रो डायग्राम दिस वन एंड डायोड. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे से डिफरेंस पचारुची द डिफरेंस बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. P type semiconductor and N type semiconductor. तो P type semiconductor N type semiconductor difference कौन अछि ना प्रथमे मन रखिबो जे P type semiconductor is formed when we add trivalent impurity to it. Trivalent impurity add कले मोर P type semiconductor formation हबो. N type semiconductor मोर formation हबो whenever we add pentavalent impurity to it. तार valency होची 5. Next, majority charge carrier in case of majority charge carrier तमरा P type पाई होची holes and minority carrier minority charge carrier is your electrons. Your electrons. यदि मु N टाइप रे देखिबी N टाइप रे majority charge carrier is electron and minority charge carrier is hole. Okay. Majority charge carrier and minority charge carrier. Okay.
This is electrically neutral. It is also electrically neutral. କହିଛି both are electrically neutral. ଏଠି କ'ଣ ହବ ସେଇ ଜିନିଷ number of holes is much greater than number of electron. And here the reverse thing, number of electron is much greater than number of holes. So this is the difference between your p type semiconductor and n type semiconductor. एठी आउ डिफरेंस कौन अछि एठी आउ गोटे डिफरेंस अछि हमर अछि जोडा को हमें कहूछु कोन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर intrinsic semiconductor and intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor and intrinsic semiconductor. ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ डिफरेंस टाକୁ ଏମିତି टेबुलर फॉर्मेट रे रखिबो. Extrinsic semiconductor is impure semiconductor. Means after adding impurity you are getting extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor is the pure form of semiconductor. Pure form of semiconductor means no impurity added. Extrinsic semiconductor conductivity level is better. Here conductivity is better, but intrinsic semiconductor conductivity level is low. Conductivity level is low. Okay, practically we use more extrinsic semiconductor. Practically more use. Practically more used. This is practically less used. Practically less used. Okay. So these are the differences. Semiconductor chapter ru etik difference asibo. How question asibo kon ethi? The question pachare draw the half wave circuit diagram along with input and output waveform. Half wave circuit diagram, half wave rectifier ro circuit diagram draw karo. तार इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करो. So it is half wave rectifier. Half wave rectifier. The circuit diagram and input output waveform both draw करिवो. So this is the circuit diagram of half wave rectifier. This is RL, this is diode D1, this is input AC, and जदि output waveform कथा पड़ला input and output waveform, so this is ये तळे लिखिबो तमे clearly exam रे इठी लिखिबो clearly जे circuit diagram of half wave rectifier. Okay, input output waveform केमतिया. This is my input waveform AC. So this is the representation of AC. This is time axis T. This is voltage axis V in. Input voltage. যেহেতু এটা half wave rectifier, only one half, that is only positive side I will get, no negative part I can get. So output will be, this is time axis T, this is voltage axis V out.
I have diagram is this one. This will be dotted line, again positive, dotted line, again positive. So this is my input and output waveform. Input and output waveform. So this is the answer in front of you. Circuit diagram of half wave rectifier and input output waveform. Okay. So another question is that differentiate conductor, semiconductor, insulator. Conductor, semiconductor, and insulator according to band theory. So according to band theory, whenever telling that, band theory means हमको आगे एक्सप्लेन करिया को पड़िबो व्हाट इज कंडक्टर डेफिनेशन सिंपल जेमते आज यूजुअल हमें जानिचु एंड सबरे आइदर तमरो कंडक्टर सेमीकंडक्टर भीतर डिफरेंस पचारि पारे किंबा सेमीकंडक्टर इन्सुलेटर भीतर पचि पारे नहले इन्सुलेटर कंडक्टर भीतर पचारिबो मु तीनटा सारा बते दउची जोटा तमरो क्वेश्चन आसीबो नीड रे से हिसाब रे करिवो तो सबरे टेबुलर फॉर्मेट रहिबो ओके जस्ट ए मिनिट तुम साउंड रे किसी इश्यू अच्छे टेक्निकल इश्यू जस्ट ए मिनिट खाली टिके वेट करो इट वेट ओके नाउ इज इट ऑडिबल स्टूडेंट्स सुबह जाउची इधर ये ऑडिबल अरे स्टूडेंट्स इज इट ऑडिबल तुम क्लियरली वॉइस जाउची ये कमेंट दियो काइंडली whether it is audible or not okay is it audible okay is it audible now but there was an audio issue technical issue ताको रिजॉल्व करने ପାଇଁ टाइम लगुची तो काइंडली फीडबैक करो whether it is now clearly audible or not is it audible yes fine fine so we are in a difference of conductor semiconductor and insulator तो मु बारंबार तुमको कहूँ तुमको केयरफुली सब जिन शुणा पड़ो तो प्रथम जिन कौन तुमको कराया पड़ो ना आगे डेफिनेशन लिखिबो व्हाट इज कंडक्टर व्हाट इज कंडक्टर A simple conductor definition आमे जानिचु conductors are those substances which carries current easily or through which current can pass easily
they are called as conductors. Okay, आउ कौन अच्छी नेक्स्ट जिनस मोर अच्छी insulator. So what is insulator? Now insulator is just opposite of conductor. Substances through which no passage of current will not be passed, those are called insulators. We have third category, that is called semiconductor. We call it semiconductor. Semiconductor are those substances which resistivity lies in between your conductor and insulator. तो तीनटा जगह तुम सबुठ इम्पोर्टेंट है प्रथम तुम डेफिनेशंस रहिबो को जिनसटा कौन सब जगह तुम डेफिनेशंस रखिबो. The conductors are those substances which can pass current easily. Insulators are those substances where there will be no passage of current, and semiconductors are those substances which has resistivity in between conductor and insulator. The next important thing is that you have to draw the band diagram, because band theory हिसाब से पचारिछि तुमको band diagram काटिबा को पड़िबो. तो band diagram माने कोन हमर दीटा band अछि. यदि conductors रो band diagram मु देखिबी हमर conduction band and valence band, they both are being overlapped. They both are being overlapped. Okay, तो आमे देखिबा वर्तमान एटा हला कंडक्टर रो तमरो बैंड डायग्राम मु ड्रॉ करूची. I am drawing the valence band diagram, conduction band diagram for the conductor. This is my valence band, this is my conduction band, and they are overlap, or there is no gap between your conduction band and valence band. But whenever I am considering about insulator, in case of insulator, there is a wide gap between your conductor, between your valence band and conduction band. यदि मु valence band conduction band देखिबी कोथरे insulator रे, so clearly there will be a wide gap. There will be a wide gap, nearly 5 electron volt. This is my valence band and this is my conduction band. There will be a very wide gap near about 5 electron volt. But in case of semiconductor, the gap will be very small. Neither it is overlap, neither it is two lap, but the gap, this gap is known as forbidden energy gap. Here we don't have any forbidden energy gap, but here we have a gap, wide gap. And in case of semiconductor, the gap is quite low. The gap is quite low. That is, the gap is quite low. This is your valence band, this is your conduction band, and energy band gap is nearly about 1 electron volt. This is 1 electron volt. Next comes to the example. The conductor example daba ame kohu all metals. We call it all metals, that is aluminum, iron, copper. Insulator कहले example हैला wood, plastic, glass, etc. Semiconductor कहले example हैला germanium, silicon, etc. So these are the things you have to present in your answer clearly. Definitions रहिबो, band diagram रहिबो, example रहिबो, and आउ गोटे लाइन जोड़ी परिबो forbidden energy gap भितरे जोटा लिखिचो. In case of your conductor, there will be no forbidden energy gap. In case of insulator, there will be a wide gap that is near about 5 electron volt. But in case of semiconductor, the gap is very low, that is near about 1 electron volt. Okay. So these are the important questions of semiconductor chapters as far as 2 mark and 3 mark questions are covered. Okay. Now we will move into the next section. There is out a question tamar ethi achi sabubale important question kono. Now, VI characteristics of diode, forward bias, reverse bias, both will be drawn. It is a very easy question. Forward bias and reverse bias.
forward bias and reverse bias of diode, VI characteristic of diode. ओनली डायग्राम एथिरे पचरा जाउची, तुमको किछि डेफिनेशन पचरा जाउनी, तो तमे काइंडली ये डायग्राम टाको बहुत क्लियरली ड्रॉ करियो, बिकॉज ओनली डायग्राम ड्रॉ कले तुमको 3 मार्क्स मिलिबो. तो केयरफुली डायग्राम को देखो. दिस इज फॉरवर्ड करंट IF, this is forward voltage EF, this is reverse voltage VR, this is reverse current IR. Next, your forward current is in milliampere, reverse current is in microampere, here it is in volts, and here it is also in volts. Okay. Next, the characteristics will be this will be knee voltage, this will be breakdown voltage. This is the diagram, VI characteristics, we have to draw it. If पचारिला क्वेश्चन जे नी वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज रो डेफिनेशन लिख, तो सिंपल जिनस कौन लिखिबो, नी वोल्टेज इज अ पॉइंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन आफ्टर व्हिच देयर विल बी राइज ऑफ करंट, एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज is the point in the reverse direction where there will be increase of current in the reverse direction. So this is the diagram, you have to draw it clearly, and this gives you 3 marks. So this is all the questions, 1 mark, 2 mark, 3 mark of semiconductor chapter. Okay. Next, we'll move on to the next chapter, which we call it as nuclei. ये चैप्टर एक्चुअली बहुत रिड्यूस हो जाइए. न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर एक्चुअली गोटे क्वेश्चन तुम ये पढ़े सब बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. राइट डाउन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स. राइट डाउन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स. क्लियरली मु लिखुची 4 properties of nuclear force. 3 मार्क क्या क्वेश्चन एटा. न्यूक्लियर फोर्स रो 4टा प्रॉपर्टी से पचारिबो. 4 properties of nuclear force कौन कौन ना, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस. मु खाली हिंट लिखुची तमे उसे बुझिबो. दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस. Number 1. Number 2 is that they are charge independent. They are charge independent. Number 3, they are non-central force. They are non-central force. Number 4, they are spin dependent. They are spin dependent. Short range means within 10 to the power minus 14 to 13 say range रे जीवो. Charge independent means whether it is positive or negative ता संगरे किसी मतलब नहीं. Non central means whenever there is a distance calculation, Coulomb's law रे आमे पढ़िथिलु from one center रो आ गोटे center, but आर सेमती किसी रिलेशन नहीं. एनी जगह रो नहीं परिबो तमे. सेंटर रो संगरे आर बेसी किसी कनेक्शन नहीं और लाइन ऑफ एक्शन नहीं. नेक्स्ट इज स्पिन डिपेंडेंट मींस वेदर दे आर रोटेटिंग एज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ता ऊपर डिपेंड करिवो आर स्ट्रेंथ टा. ओके, सो दिस इज अबाउट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स. एंड आ गोटे क्वेश्चन तमर एथिरे बारंबार आसुची
जोटा को आमे कहूछु कौन ना तुमरो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन. These are another set of important question. One is your isotope, isobar, and isoton. A question गोटे important question. What is isotope? What is isobar? What is isoton? ये क्वेश्चन आंसर तुमको क्लियरली लिखा पड़ो जदि आम देखा से हिसाब रे. तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन एक्जाक्टली एटा तुम केमिस्ट्री रे ऑलरेडी पढ़ी सारी थिबो. बट जेहेतु एठी चैप्टर रे अछि आम आउ थरे ताको डिस्कस कर दबा. व्हाट इज आइसोटोप, व्हाट इज आइसोबार, व्हाट इज आइसोटोन. So let me just get a minute. Okay. So isotope, isobar and isotone. यदि आम से क्वेश्चन आंसर देखा. व्हाट इज आइसोटोप? ना आइसोटोप आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ओके. आइसोटोप आर दोज सब्सटेंसेस और एटॉमिक नंबर सेम रहिबो, एटॉमिक नंबर रहिबो सेम बट मास नंबर डिफरेंट. फॉर एग्जांपल करो जेमती आमे लिखुचु Li lithium 36 and lithium 37. Here atomic number is constant but mass number is different. We call it as isotope. Then we call to isobar. यदि isobar रो आमे कथा हबा, isobar रे कोन ना your atomic number is different but mass number is same. So we can call it as calcium 20, 18 and argon 40. It is calcium 20, 40 and argon 18 and 40. So here is your mass number is same but atomic number is different. That is called your isobar. Now when you come to isoton, number of neutrons is same. Number of neutron is same. We call it as isoton. So this example is, we can say it, chlorine 17, 37 and potassium 19, 39. So the difference karibo anchor number of protons saman rahibo, that is equal to 20. This difference is 20, this difference is 20. So what is isotope? Write the definition of isotope. What is isobar? Write the definition of isobar and isoton. एक मार्किया क्वेश्चन ने पचारि पारे तळे एलिमेंट दे देथिबो, आइडेंटिफाई व्हिच वन इज द आइसोटोप, व्हिच वन इज द आइसोबार और व्हिच इज द आइसोटोन. तो नंबर ऑफ जदि एटॉमिक नंबर सेम रही कि तमरो मास नंबर डिफरेंट रहला, वी कॉल देम एज आइसोटोप. If your mass number is same, atomic number is different, we call it as isobar. If number of neutrons is same, we call it as isoton. And one more important question is that difference between nuclear fusion and nuclear fission. Difference between nuclear fusion and nuclear fission. Nuclear fusion and nuclear fission. Carefully देखिबो, it is one of the important question. Nuclear fusion and nuclear fission. What is nuclear fusion? The lighter nuclei combine together. Here
lighter nuclei combine together. Okay. In case of nuclear fission, heavy nuclei breaks into smaller one. Heavy nuclei divided into smaller one. Okay. One more thing, neutrons are the link particle. In case of fusion, in case of your fusion, protons are the link particle, and in case of fission, neutrons are the link particle. Okay. Then it is a quick process. Fission is a quick process. Number 2 or 3. It is a quick process. It is a slow process. Fusion is a slow process. And energy, you can say that it is more harmful. Nuclear fusion is more harmful. It is more harmful. Less harmful. Less harmful in the sense, radioactive waste जोटा बड़ी पड़े तमरो फ्यूजन रो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस टा बहुत डेंजरस एनवायरनमेंट पाई, बट फिशन रे जो आउटपुट टा बाहर से आउटपुट टा इज नॉट दैट मच डेंजरस एज योर फ्यूजन. ओके. एंड आम एग्जांपल कौन दबा ना हमर न्यूक्लियर फ्यूजन होची हाइड्रोजन बॉम्ब. वी कैन कॉल इट हाइड्रोजन बॉम्ब एंड दिस इज योर एटम बॉम्ब. So these are the differences. Clearly mu kahichi mention kali. Lighter nuclei combine together for nuclear fusion. Heavier nuclei splits for nuclear fission. Here it is, proton is the link particle in case of your fusion. Neutron is the link particle for fission. Nuclear fusion is a slow process. Nuclear fission is a quick process. The waste which are produced are harmful in case of fusion, but in case of fission they are less harmful. It is hydrogen bomb. This is your atom bomb. So these are the questions from nuclei chapter, and one or two more definitions which are present. One is your binding energy and mass defect. Binding energy and mass defect. What is mass defect? Binding energy and mass defect. Binding energy, mass defect, and a relation between them. What is the relation between them? Now, binding energy, that amount of energy, the energy required to break a nucleus. Gote nucleus को break करिया ପାଇଁ ଯେତିକି energy ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ कहू binding energy. Okay. What is mass defect? Now, difference between atomic mass and mass number. आमे लिखले एटा को लेखु केमती ना del m is equal to m minus a. Atomic mass and mass number difference होची मोर mass defect. What is the relation between them? Now, binding energy B is equal to del m into c square, where c is the velocity of light. What is binding energy? Again I am repeating. The energy required to break a nucleus is called binding energy. Mass defect is the difference between your nuclear mass and atomic mass, and relation between them B is equal to del m into c square. Okay, these are the relation. एठी आउ गोटे क्वेश्चन तमरो अछि binding energy curve. What is the binding energy curve and what is the explanation of it? जदि हमें binding energy curve को देखिबा, this is the binding energy curve. This is 40, this is 120. This binding energy is 8.5 MeV. This is P by A axis. This is
A axis. So what we can see 3 points. It is तीनटा important point तुमको ये ग्राफ विषय लिखिबार अछि. कौन number 1 point? Substances having atomic weight below 40 and above 120 have binding energy which is less than 8.5 MeV. जो substance मानकर atomic weight below 40 अच्छी आउ 120 अच्छी तांकर binding energy 8.5 MeV रु कम, which is clearly shown in the diagram. Next point, substances between atomic number or atomic mass 40 and 120 have a stable binding energy which is 8.5 MeV. 40 ru 120 भितरे जो मानकर अछि mass number, they have a stable binding energy 8.5 MeV. Another one, here we have a cyclic occurrence of binding energy with multiple of 4. जो diagram रे तमे देखिबो हमर 2He4 1H1 2He4 4OH OH16 माने 4 रो मल्टीपल रे हमर बाइंडिंग एनर्जी एठी कोन हेची साइक्लिकल ऑर्डर रे इंक्रीज होची. These are the 3 points. किंतु क्वेश्चन हैला एठी पचारि दिए से क्वेश्चन टा explain nuclear fusion and fission basing on the binding energy curve. तो मु जेमति न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन डिफरेंस रे तुमको क्लियरली कहितली जे लाइटर न्यूक्लियाई माने फ्यूजन रे पार्टिसिपेट करिवे, हेवियर न्यूक्लियाई माने फिशन रे पार्टिसिपेट करिवे. तो लाइटर न्यूक्लियाई कहला माने एटॉमिक नंबर जहार बिलो 40 दे कम्स ऑन द कैटेगरी ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई. तो से माने फ्यूजन रे पार्टिसिपेट करिवे. बट जो सब्सटेंसेस मानकर एटॉमिक मास तमरो मोर देन 120 से माने फिशन रे पार्टिसिपेट करिवे. That is the thing. Only this is the point. You have to write it down. Nuwa kichi nahi. Fission, fusion, binding energy curve. This is all about your nuclei chapter. So these are the few important questions. जोटा मैं डिस्कस कली. वर्तमान आम नेक्स्ट चैप्टर को जीवा. The chapter is atom. Atom chapter रे आम questions वर्तमान डिस्कशन करने को आरंभ करिवा. We'll start with atom. तो आटम चैप्टर रे आम प्रथम क्वेश्चन जोटा गोटे पढ़ुची बारंबार सब बेले मन रखिबो. आटम चैप्टर गोटे क्वेश्चन पढ़ुची जे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तुमको देई दोउची. गोटे क्वेश्चन ने तुमको देई देला थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग. एठी किछि भी वैल्यू थाई पारे. 8000 थाई पारे, 9000 थाई पारे. Any value you can have it. Okay. So threshold wavelength, threshold frequency नुआ carefully mark करो. मु कहूची threshold wavelength is your 8000 Armstrong. Threshold wavelength is 8000 Armstrong. Question पचारुची what is meant by this? यार meaning कौन? What is meant by this? यार exact meaning टा कौन? Next question पचारुची what will happen? What will happen if a longer wavelength, suppose करो 9000 Armstrong is projected. मते threshold wavelength देई देला 8000. तार माने पचारला. नेक्स्ट कौन कला ताठू गोटे हायर ऑर्डर वेवलेंथ देला 9000 वेवलेंथ. ताहले यार मीनिंग कौन हैला? तो मन रखिबो हमर गोटे कॉमन जिंस आमे जानिचु कौन ना v प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्बडा. v प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्बडा. ओके. और आमे कहूचु
the velocity is inversely proportional to your wavelength v proportional to 1 by lambda तो बर्तमान एठी कोन हेची तार माने हला जदी मोर 8000 वाल जदी मोर एटा वेवलेंथ अछि ता माने सॉरी v नो f inversely proportional to 1 by lambda the frequency just making it more clear f proportional to 1 by lambda जदि मोर वेवलेंथ बेसी हुए मोर फ्रीक्वेंसी कमी जीवो एटा हला इनवर्सली रिलेटेड तो 8000 आर्मस्ट्रांग माने जदि 8000 रो तळकू भी कोनोसी वेवलेंथ मु दिए ताले कोन हबो मोर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एथिरे हमर आमे कहूछु कोन ना इनिशिएशन हेई परिबो ओके ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तमरो एक्चुअली एटम और डुअल नेचर बोथ समवट रिलेटेड अछि तो सेत पई क्वेश्चन टा मैं डिस्कस कर देली wavelength and frequency both are interrelated as inversely proportional so anything below 8000 will can initiate the आमे कहि परिबा कोन ना initiate the photoelectric effect but जदि हायर वेवलेंथ देलो ताले फ्रीक्वेंसी कोन हबो कमी जीवो कमी गले कोन हबो मोर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एठी हबो नाही हमर फोटो इलेक्ट्रिक हबो नाही एटा को एटम एंड डुअल नेचर मु कंबाइन कर दोउची so that it will be easier atom and dual nature both so frequency and wavelength जेहेतु इनवर्सली रिलेटेड तो 9000 हे गला माने मोर फ्रीक्वेंसी कमी जीवा एंड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कमी गले तमे जानि छ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होची मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट व्हिच देयर इज इनिशिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो सेटा हेई परिबो नाही ओके तो एठी आ गोटे क्वेश्चन आसे हमर कोन ना व्हाट इज वर्क फंक्शन एंड व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क फंक्शन कौन आउ स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन दीटा डेफिनेशन पचारिबो दी मार्क दबो सी व्हाट इज वर्क फंक्शन एंड व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क फंक्शन इज दैट एडिशनल एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल गोटे मेटल सरफेस रु इलेक्ट्रॉन बाहर करिया पई मटे जेतिक एनर्जी दरकार आमे ताको कहूचु वर्क फंक्शन स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन ना स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल और दैट नेगेटिव पोटेंशियल व्हिच इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो सपोज करो मो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे मोर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होउची मु जदी -5 कर देबी ताले मोर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ता 0 हे जिवो तो अगेन कहूची व्हाट इज वर्क फंक्शन now work function is that amount of additional energy which is required to take a electron from the surface of a metal and stopping potential is that negative potential or kichi book re lekha hichi retarded potential which stops the photoelectric effect so these are the relation and jodi yaro numerical ku tame jibo numerical re tomar ethi gotte jinso dekhauchi kon na dita function achi dita formula W is equal to HF0 okay this is one of the most important question W is equal to HF0 ए क्वेश्चन टा बारंबार पचरा होची आ गोटे क्वेश्चन तमरो अछि लैम्बडा इज इक्वल टू h by mv लैम्बडा इज इक्वल टू h by mv लैम्बडा इज इक्वल टू h by mv so these are the questions ए दीटा फार्मूला को बेस करके तमर सबु तक न्यूमेरिकल हबो W is equal to HF0 lambda is equal to h by mv where h is Planck's constant m is mass of the particle v is equal to velocity okay so these are the formulas ए दीटा फार्मूला को कोर करके चलिबो एथरे तमर मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आसीबो एथरे एठी आ गोटे क्वेश्चन पचारुची डुअल नेचर रे one of the most important that is matter wave duality मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए वर्ष पाई मैटर वेव डुअलिटी से पचारुची व्हाट इज मैटर वेव डुअलिटी जिनसटा कौन ना मैटर वेव डुअलिटी होची जने तमरा डी ब्रुगली और डी ब्रॉय बोली आमे कहूचु डी ब्रॉय हाइपोथेसिस देले दैट नेचर लव्स सिमेट्री नेचर loves symmetry ता माने कौन
आमर टोटाल फिजिक्स हिसाब रे जदि देखिबा आमर दीटा जिंस अच्छी नेचर रे कौन गोटे होची मैटर आउ गोटे होची एनर्जी वन इज मैटर अनदर वन इज एनर्जी तो मैटर रो से कहले गोटे हाइपोथेसिस जदि आमर वेव भितर पार्टिकल नेचर रोचे बिकज आम कहूँ कौन जो लाइटा आम एमती देखुचु पड़ुचु बोली सेटा सिंगल लाइट नुह इज आर पैकेट्स स्मॉल स्मॉल पैकेट्स जोटा को आम कहूँ फोटॉन्स बोली तो जदि लाइट रो पार्टिकल नेचर रोचे ओके तो पार्टिकल रो भी वेव नेचर रहिबो दिस इज कॉल्ड मैटर वेव डुआलिटी क्लियर से कहले कौन नंबर वन नेचर loves symmetry we have only two things in nature one is matter another one is energy तो जोटा को एनर्जी बोली कहूँ सपोज लेट केस ऑफ लाइट जोटा आमको गोटे कंटिन्यूअस रे बोली देखा जाउछ सेटा एक्चुअली कंटिन्यूअस रे नुहे दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल पैकेट्स वी कॉल देम एज फोटॉन्स तो जदि वेव भितर पार्टिकल नेचर रहुची तो से कहले तमरो कौन पार्टिकल रे भी वेव नेचर रहिबो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज मैटर वेव डुआलिटी ओके एंड मैटर वेव रे वेवलेंथ ता कौन हबो जदि रहिबो सेठी वेवलेंथ हबो लैम्बडा इज इक्वल टू h by mv where lambda is the wavelength of matter wave, h is the Planck's constant, m is the mass of the particle, v is the velocity of particle. This is wave particle duality or matter wave duality. ए जिनसटा तुमको ए हिसाब रे एमती रिप्रेजेंट करबा को पड़िबो ओके so this is all about your dual nature आमे dual nature सांगरे एठी एटम को रखिचु तो एटम रो क्वेश्चन जदि आमे डिस्कस करिबा एटम रे गोटे कॉमन क्वेश्चन तमर सब बेले आसुची 2 मार्किया 3 मार्किया रे कोन ना रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग experiment Rutherford alpha ray scattering experiment don't confuse it with Rutherford's atomic model okay Just a minute, I'm just clarifying the notes for a minute. Okay. So एठी क्वेश्चन आसुची रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एथरे लेखा जीवो कोन ना एथरे तुम लेखा जीवो तीनटा ऑब्जर्वेशन एंड तीनटा कंक्लूजन जोटा को आम लैंग्वेज रे कुआ होची सिग्निफिकेंस बड़े बड़े पिला बुझी पाउ नांती व्हाट इज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सिग्निफिकेंस तो सिग्निफिकेंस माने तीनटा ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशंस कौन कौन ऑब्जर्वेशन पाइथिले रदरफोर्ड ना व्हेनेवर दे स्ट्राइक द alpha particle to the gold foil he saw that most of the alpha particle went in a straight line most of the alpha particles went in a straight line तार conclusion कौन ड्रॉ कले जे atom have lots of empty spaces atom has lots of empty spaces okay next देखिले किछि पार्टिकल 8000 in 1 is deviated greater than angle 90 degree किछि पार्टिकल बहुत स्मॉल पार्टिकल 8000 रु गोटे पार्टिकल तमर ग्रेटर देन 90 डिग्री रे डेविएट होची जेहेतु मु जो पार्टिकल रे अल्फा पार्टिकल को होची अल्फा पार्टिकल होची पॉजिटिवली चार्ज एंड ये डेविएट हे जाउची द डायग्राम इज लाइक दिस ता माने ए सेंटर रे जो चार्ज अछि एटा होची पॉजिटिवली चार्ज and whole of the mass is
centered at a point which we called it as nucleus. ओके ये दुईटा जिनस से ऑब्जर्वेशन करथिले नेक्स्ट जिनस कौन ऑब्जर्व करथिले ना वेरी फ्यू पार्टिकल बहुत कम पार्टिकल 180 डिग्री एंगल रे रिट्रेस करथिले ता माने कौन न्यूक्लियस बोली जो सब्सटेंस टा अछि से सब्सटेंस टा पॉजिटिवली चार्ज वेरी कंसंट्रेटेड एंड ऑक्युपाइज वेरी लेस स्पेस ये छटा पॉइंट तुमको लिखा पड़ो मु आउ थे डिस्कस कर दूची कौन ना यहाँ हूँ मोस्ट ऑफ दी देखिले अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन रे पड़ोची ता माने हला आटम भितरे बहुत एम्प्टी स्पेस अछि एटा हला तार फर्स्ट पॉइंट किछि पार्टिकल ग्रेटर देन 90 डिग्री रे डिफ्लेक्ट करूचंती ता माने सेंटर रे जो पॉजिटिव चार्ज ता जो तुम न्यूक्लियस अछि इट इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज अल्फा इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज दैट्स व्हाई इट इज डिफ्लेक्टेड बाय द सेंटर एंड वेरी फ्यू पार्टिकल ओके रिट्रेस इट्स पाथ जेमिति आसीतले सेमिति फेरी जाउचंती ता माने हला जो सेंटर रे न्यूक्लियस अछि तार वैल्यूटा भी बहुत स्मॉल दिस इज अ वेरी स्मॉल वन दिस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन तमर एथिरे कोन आसुची पुणी बेले बेले पचारि दउची प्लम पडिंग मॉडल और ताको आम लैंग्वेज रे हमें कहूछु जे थॉमसन मॉडल बोली प्लम पडिंग मॉडल कहले हमें या बुझू प्लम पडिंग मॉडल इज नथिंग से कहते जे होल ऑफ दी atom is consist of positive charges uniformly positive charges and negative charges are present scattered here and there इटा कहते जे थॉमसन आपको कहते प्लम पडिंग मॉडल बोली और जे थॉमसन आपको कहते बट ये एटम थ्योरीटा एथिपाई पॉपुलर हैला नाही जेहेतु ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करि पारि नथिले ओके तो तापर जिबा हमें रदरफोर्ड को एटॉमिक मॉडल को जो थे से कहले कौन ना तुम एटम जोटा अच्छी तार होल ऑफ द सेंटर मास पार्ट रे न्यूक्लियस और टोटल मास ऑफ द कंटेंट इज प्रेजेंट इन द सेंटर वी कॉल्ड इट न्यूक्लियस प्रथम जिनस कही द्वितीय जिनस कही अराउंड व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग ता चारिपटे तुम इलेक्ट्रॉन माने एमती रिवॉल्व करुचंती एंड आउ गोटे जिनस कही जे जो जेहेतु सर्कुलर पाथ रे बुलुचंती एंगुलर मोमेंटम हबो nh/2 पाए तांकर जो फाइंडिंग्स थिला प्रथम फाइंडिंग्स थिला रदरफोर्ड को कोन ना न्यूक्लियस व्हिच इज ए सेंट्रल एलिमेंट ऑफ एन एटम द न्यूक्लियस और होल ऑफ द मास ऑक्युपाइड द सेंटर वी कॉल इट एज न्यूक्लियस सेकंड फाइंडिंग से करथिले मु कहली कोन ना इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus in circular orbit रे मूव करूचंती 3 नंबर पॉइंट से कहितले जेहेतु सर्कुलर पाथ रे मूवमेंट करूचंती और एंगुलर मोमेंटम आसीबो एंड एंगुलर मोमेंटम इज mvr which is a multiple of nh/2 pi mvr is equal to nh/2 pi देन फोर्थ वन कौन कहूची ना फोर्थ वन कहले व्हेनेवर द एटम मूव्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट्स एनर्जी एंड व्हेनेवर इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी इट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट और वी कैन सी इट एज hf is equal to E2 minus E1. So these are the postulates given by Rutherford. But limitation भी तुमको देखिया को पड़िबो limitation रे से कौन कहिथिले ना limitation रे एया कहिथिले जे whenever electron is moving suppose here we have a nucleus electron is moving around it gradually radiates energy and finally falls in the nucleus. तो न्यूक्लियस रे इलेक्ट्रॉन बुलला बळे एनर्जी रेडिएट करिवो एंड कंटिन्यूअसली स्पाइरल पाथ फॉलो करके तमरो सेंटर रे कोलैप्स करि जिवो व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू द स्टेबिलिटी थ्योरी एमिति केबे हबो नाही स्टेबिलिटी थ्योरी अनुसार जदि कोलैप्स करबे ताला टोटल कोनोसी सब्सटेंस रहिबो नाही आउ गोटे लिमिटेशन कोन थिला आंकर से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करि पारि नथिले ही कैन नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तुम से इवालुएट और तुम एक्सप्रेशन करें जे केमिति हाइड्रोजन रे गोटे प्रोटॉन गोटे न्यूट्रॉन रहिला परे भी हमें पांचटा सीरीज बाहर करूछु. So these are the findings of, you can say, Rutherford's atomic model. Rutherford's atomic model. Rutherford atomic model परे जोटा improved model आसिला से improved model हला Bohr's atomic model. तो बहुत पिला बेले बेले कंफ्यूज हुअंती एक्जाक्टली सर दीटा दीटा पोस्टुलेट आमे केमिति मने रखिबु. तो ये बेसिक किछि चेंज कले नाही. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोर्स मॉडल नियर अबाउट सेम गोटे स्मॉल चेंजेस खाली करथिले से चेंजेस टा को मार्क कले मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. ये भी से कहले जे होल ऑफ द मास ऑफ द एटम concentrated at the center we call it as nucleus. बट ये कौन कहले जेतेबेले इलेक्ट्रॉन तमर सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलुची से जेकोसी रैंडम ऑर्बिट रे बुलिबनी किछि फिक्स्ड ऑर्बिट अछि आमे ताकू कहूछु स्टेशनरी ऑर्बिट और परमिटेड ऑर्बिट. But whenever they are moving in the permitted orbit, they don't radiate energy. से माने एनर्जी रेडिएट करंती नाही. So they keep on moving. एई चेंज ता से करथिले. से स्टेशनरी ऑर्बिट रे जेतेबेले इलेक्ट्रॉन मूव करिवो it will not radiate energy and it will keep moving around it like this circular. तो एठी तमर स्टेबिलिटी थ्योरी को से कॉन्ट्राडिक्ट कर. नेक्स्ट MBR equal to NH by ठीक थिला एंड HF E2 minus E1 भी थिला. एंड एठी जदि आमे पचारिबा व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बोर. लिमिटेशन बोर रे कोन सी एक्सप्लेन करि पाले नाही. व्हाई द ऑर्बिट शुड बी ओनली सर्कुलर काहे कि एलिप्टिकल हबो नाही. दिस इज अनदर लिमिटेशन. एंड अगेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी से एक्सप्लेन करि पार नथे. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी. तो एठी तुमको एटम चैप्टर रे कौन करिवार अछि ना मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट आउ गोटे अछि ए एटम चैप्टर रे. बट मु प्रथमे क्लियर कर दोछि. तो आमे जहा फाइंडिंग्स कले एटम चैप्टर रे मते एठी एटम रो मॉडल सब को जानिबार अछि. एटम रो मॉडल कौन कौन मो पकरे मॉडल अछि. गोटे होछि जे थॉमसन कर प्लम पडिंग मॉडल. प्लम पडिंग मॉडल. तापरे तमर रहिला रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. देन बोर्स एटॉमिक मॉडल. Bohr's atomic model, and along with their limitations. Tankor limitation. What are the limitations? And Bohr's theory already tame janicho for long question pai eta hochi. A long question tomare borso pai important achi. So these are the questions from one half part of the atom. जदि आउ गोटे पार्ट को आमे एटम रो जीवा सबुठु इंपोर्टेंट पार्ट हला एठी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. एटा गोटे कंप्लीट क्राइटेरिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रे क्वेश्चन कौन आसुची सी एठी मागी दोची ट्रांजिशन इक्वेशन दियो एनी टू सीरीज. मो पाखरे सीरीज कहले पांचटा सीरीज मो पाखरे अवेलेबल अछि. कौन कौन सीरीज ना गोटे हला बाल्मर सीरीज. One is number one is your Lyman series. Number one is your Lyman series. Number two is your Palmer series. Number three is your Bastian series. Number four is your Brackett series. Number five is your P-Font series. आपको नहीं कि गुड़ाए क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन से बनई पारुची. ओके तो मते खाली गोटे कमेंट करो जे एती पंत तुमको जहाँ डिस्कशन कलेनी इज इट क्लियर और नॉट. साउंड आसुनी. ओके 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 साउंड प्रॉब्लम. ओके ओके जस्ट a minute. Okay just a minute.
Okay, just a minute. Continue. Okay. So now is it audible? Hello. Okay. So I think now it is clear. क्या सरले ऑप्टिक्स सारिकी रखिबा 4टा चैप्टर एटा 4 नंबर चलछि सर ऑप्टिक्स सारिकी गोटे हाफ करिक आर हाफ रखिबा ऑप्टिक्स पर क्लोज कर दो audio. Okay. So we are in the discussion of hydrogen spectrum. So hydrogen spectrum total we have 5 series. I am clearly mentioning it. Number 1 is your Lyman series, Balmer series, Paschen series, Bracket series, found series. These are the 5 series of the hydrogen spectrum. कोडा हाँ ओके ओके सो लाइमन बाल्मर पाशन सीरीज एठी क्वेश्चन कौन आसुची एठी बेले बेले से पचारि दउची कोटा को रीजन रे अछि ओके एठी मन रखम कहि दउची लाइमन सीरीज लाइज ओके बाल्मर सीरीज राइज इन द विजिबल रीजन ओके एगुडा सब होची तमर इंफ्रारेड रीजन रे एंड दिस इज अल्ट्रावायोलेट रीजन एटा गोटे प्राइमरी क्वेश्चन आसुची Lyman series lies in the ultraviolet region. Palmer series lies on the visible region. Paschen bracket P-font series lies in the infrared region. आउ कौन क्वेश्चन एथिरे पचारुची से पचारुची राइट द ट्रांजिशन इक्वेशन. ट्रांजिशन इक्वेशन माने जेमती आमे ऑलरेडी जानिचु फंक्शन जदि लखिबि मु कहार बाल्मर सीरीज रो f bar is equal to
1 by 1 square minus 1 by n square whole into r. এটা বালমর সিরিজর ইকুয়েশন। যদি মু জিবি তোমার সরি লাইমন সিরিজ, যদি বালমর সিরিজ পাই মু জিবি r into 1 by 2 square 1 by n square, where n is equal to, যেহেতু এটি 1 present ଅଛି, n will be 2 3 4 5. Here 2 is present, so n is equal to 3 4 5. And for past tense series, f bar is equal to r into 1 by 0 square minus 1 by n square, and n is equal to 4 5 6. Likewise पांचटा सारार सीरीज तुमको एक्सप्रेशन रखा पड़ो, कौटा कौ रिजन रे अच्छी कौटा कौ सीरीज रे अच्छी, कौन भी क्वेश्चन पचारि पारे। बेले बेले से पचारि दउची ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मीन्स आम पचारिबो बाल्मर सीरीज को ड्रॉ कर। तो ड्रॉ करने तुमको कौन करा पड़ो ना, फॉर इन ऑर्डर टू ड्रॉ दैट वन तुमको एनर्जी लेवल मन रखा पड़ो। टिके तुमको टाइम लगे। एनर्जी लेवल माने दिस इज माय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आम जानिचु आमर ग्राउंड लेवल जोटा, ग्राउंड लेवल रे एनर्जी होची -13.6 eV, ओके। एंड ता ऊपर को होची -3.4, -3.4। देन नेक्स्ट अपर वन इज -1.5। नेक्स्ट ता ऊपर को होची -0.85। then just -0.54, then -0.38, and last one is 28। तो जेतेबेले मु कथा होची लाइमन सीरीज माने कौन, all the transition that take place from the higher orbit to the fast orbit। so this is my लाइमन सीरीज। सब गुड़ा ट्रांजिशन हायर ऑर्बिट रु आसीबे तमरो, एटा हला तमर लाइमन सीरीज। जदि मु कहिबी बाल्मर सीरीज, हायर ऑर्डर रु समस्ते आसिकी पहुँचे सेकेंड लेवल रे, दिस इज माय बाल्मर सीरीज। जदि मु कहिबी पास्ट टेंस सीरीज, तो हायर ऑर्डर रु समस्ते आसिकी पहुँचे थर्ड लेवल रे। तो दीज आर द डायग्राम्स। तुमको ये वेब सीरीज रो डायग्राम टाको केयरफुली रखा पड़ो। तो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रे तमर एक क्वेश्चन ट्रांजिशन इक्वेशन, कोटा को रीजन रे अच्छी, एंड डायग्राम। यू हैव टू टेकन केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, ओके। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द सेगमेंट दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स रे तमर एक्जाक्टली जो 3 मार्किया क्वेश्चन देखिबो ए वर्ष पई, वन ऑफ द हॉट शॉट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची व्हाट इज टीआईआर। ऑप्टिक्स पाई वन ऑफ द हॉट शॉट टॉपिक होची तमर टीआईआर, ओके। यू हैव टू एक्सप्लेन इट, ओके। so then we want to go to TIR। TIR stands for total internal reflection। total internal reflection कौन ना, total internal reflection रो कंडीशन को होची कौन, आगे लिखा जिवार डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन, मींस whenever a light ray travels from rarer denser medium to rarer medium and it hits the separate media greater than critical angle, then the light will be reflected back to the same medium। डायग्राम कले तुमको क्लियरली बुझी हम। सपोज करो this is my medium, this is my denser medium, this is my rarer medium, okay। Here I have drawn 5 normals, I have drawn free normals। try to understand the concept, it will be easier for you। this is my normal n1, this is n2, this is n3, n4, and n5, okay। this is n1 n2 n3 n4 and n5। तो एठी एतबले सोर्स ऑफ लाइट मोर रहिची, हियर आई हैव ए सोर्स ऑफ लाइट S। so this is denser medium, that is rarer medium, and आमे जानिचु लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रु whenever there will be like your movement
from denser to rarer medium, the ray will move away from the normal. So whenever the light ray travels from denser to rarer medium, it will move away from the normal. For N1, for N2, again it is further move away. For N3, it is again further move away. For N4, it is 90 degree. The angle of refraction is 90 degree for N4. And after that, if it further hits, it will return back to the same medium. So, एटा हला तमर TIR रा concept. Whenever the light ray travels from denser medium to rarer medium and the light hits the separation media greater than critical angle, then the light will return back to the same medium. This is called TIR, total internal reflection. एठी आउ दिटा एक्स्ट्रा जिंस जोड़ी परिबो conditions. What are the conditions? Number one condition, that the light must travel from denser to rarer medium. The light must travel from denser to rarer medium. Second जिंस कौन कोई परिबो ना, it must hit the media at an angle greater than critical angle. Critical angle रू अधिका angle ताको hit करिवा को पड़िबो. So these are the question. And आउ कौन अच्छी एठी गोटे न्यूमेरिकल पार्ट रे गोटे मात्र फॉर्मूला तमर एठी बारंबार सब बेले यूज होउची, that is equal to, given as here you can say, mu is equal to sin a plus dm by 2 divided by sin a by 2. न्यूमेरिकल पार्ट रे एटा गोटे क्वेश्चन तमर रहउची, ए पार्ट क्वेश्चन तुमको भल से देखिया को पड़िबो टिके. ओके, तो एठी करूची कोन गोटे क्वेश्चन मु कर दउची तमर, तमर सेही हिसाब रे ताको देखिबो. तो एठी कहउची कोन गोटे क्वेश्चन दे देला मते जे angle of prism is 60 degree. A is given as 60 degree. Okay, and deviation दे देला dm दे देला 30 degree. Deviation दे देला 30 degree. Then पचारि देला what is the mu? What is the value of mu? बेले बेले ए टा 60 डिग्री डायरेक्ट न देकी से क्वेश्चन पचारिबो इन ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, इफ एंगल ऑफ डेविएशन इज 30 डिग्री, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो डायरेक्ट तो हम पर फार्मूला अछि, यू कैन पुट इट फार्मूला डायरेक्टली. तमे डायरेक्ट ए जगह रे फार्मूला पकई परिबो. So that will be mu is equal to sin A is 60, dm is 30 degree divided by 2 whole divided by sin 60 by 2. So that is equal to sin 45 degree divided by sin 30 degree. So here the answer will be root 2. Direct तमे आंसर पकेले, क्वेश्चन पकेले तमे एथरे डायरेक्ट आंसर पाई परिबो. दिस इज द ओनली फॉर्मूला, मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल्स आसुची and based on this formula. Okay, so we will go to next most important question. Compare between objective and eyepiece. Objective and eyepiece विषय गोटे comparison कर. Objective and eyepiece. Objective and eyepiece. What is objective and eyepiece? एटा तमर एक्चुअली कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे अछि. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे जोटा आखि पाखरे अछि सेटा हला आईपीस, जोटा तळे अछि ऑब्जेक्टिव, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव. तो तांको भितर डिफरेंस कोन ना, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज मोर. यार फोकल लेंथ होची मोर, आईपीस रो फोकल लेंथ इज मोर. फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज मोर. ऑब्जेक्टिव रो फोकल लेंथ होची लेस, फोकल लेंथ इज लेस. आईपीस प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज, ये प्रोड्यूस करिबो मोर वर्चुअल इमेज, एंड ऑब्जेक्ट पीस प्रोड्यूसेस रियल इमेज, ये प्रोड्यूस करिबो मोर रियल इमेज. देन आईपीस इज लार्जर इन डायमीटर, एटा डायमीटर होची लार्ज एंड यार डायमीटर होची स्मॉल, यार डायमीटर होची स्मॉल.
So these are the difference between your objective and eyepiece. Okay. आ गोटे क्वेश्चन पचारुछि रे डायग्राम पचारुछि तो रे डायग्राम रे कोन अछि मो पाखरे ऑप्शंस क्वेश्चन पई ना रे डायग्राम टोटल मोर 12टा रे डायग्राम अछि ए रे डायग्राम को समस्त भल से देखिबो कोटा पचारिबो जणा पड़िबोनी तो रे डायग्राम रे टोटल आई हैव 12 डायग्राम्स 12 डायग्राम कोन छटा हला तमरो कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर पाई एंड आउ छटा हला तमरो लेंस पाई छटा मिरर पाई छटा तार डायग्राम अच्छी रे डायग्राम गोटे डायग्राम मु तुम कर दूची गोटे क्वेश्चन पचारिछि जे सिंपल माइक्रोस्कोप रो रे डायग्राम टा ड्रॉ करो तो सिंपल माइक्रोस्कोप रो रे डायग्राम केमती हबो दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस दिस इज माय लेंस हियर आई हैव ऑब्जेक्ट ओके तो वर्तमान एठू हम पास हेले दिस इज आई this is my object AB, this is A dash, this is B dash, this distance is for simple microscope 25 centimeter, we call it distance of distinct vision and magnification formula is given by n is equal to 1 plus d by f, where f is the focal length of the lens, d is distance of distinct vision which is 25 centimeter and m is the magnification. Okay, so lens pai amaro sabutu important question hala TIR and what is the example of TIR and jemti mu कहली 12 टा डायग्राम अछि कोन डायग्राम अछि तमरो ना कनकेव कन्वेक्स मिरर रो 6 टा डायग्राम एंड लेंस रो 6 टा डायग्राम बोथ आर इंपोर्टेंट. ओके, जदि आमे एठी वेब ऑप्टिक्स पार्ट को जिबा वेब ऑप्टिक्स पार्ट रे गोटे फार्मूला तमरो बारंबार अछि जो फार्मूला टा होछि तमरो just a minute wave optics को जदि मु जीबी if I am moving on to the wave optics side it will be just a minute I will यदि गोटे मात्र फॉर्मूला अच्छे हम पाखे बारंबार से क्वेश्चन घोरे घोरे पचारुची बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाय डी बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाय डी दिस इज द क्वेश्चन. ओके, दिस इज द क्वेश्चन बीटा लैम्बडा बाय डी. इटी भैरी केमती करूची से क्वेश्चन टा केमती पचारुची बिकॉज एथरे बेले बेले एक मार्क क्वेश्चन ने पिला बहुत कंफ्यूज होंती. तो कौन क्वेश्चन से पचारची गोटे क्वेश्चन अछि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट what will happen to the fringe width if distance between slit is increased. तो वर्तमान देखो ये एक्सप्रेशन रे बीटा इज फॉर fringe width, it is the distance between source and screen and it is the distance between slit. तो से कहला बीटा टा मोर fringe width slit संगे कोन कहिची what happens if fringe width if distance between slit is increased. तो fringe width संगे slit रो distance टा or inversely proportional beta is inversely proportional to 1 by d. तो वर्तमान से कौन कहला जदि एटा इंक्रीज करिवो जदि d इंक्रीज करिवो ताले बीटा कौन हबो obviously डिक्रीज करिवो because they are inversely related. आ गोटे क्वेश्चन पचारुची इन यंग डबल स्लिट व्हाट वुड हैपन इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल. वर्तमान बीटा संगे वेवलेंथ केमिति रिलेटेड ना बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. जदि वेवलेंथ टा मोर डबल हे जिवो तो फ्रिंज विड्थ भी डबल हे जिवो because they are directly proportional. One more question. In Young's double slit experiment, separation between slits is halved. So beta is equal to lambda d by d. So slit with the distance ta half he gala and distance between source and screen is become 2 times. So what will be the fringe? What will be the new fringe width? ये टूटा ऊपर multiply है जिवो. It will be 4 beta. और आमे कही परिबा कोन
quadrupled boli. Okay, so these are the questions from your wave optics. It is one more important question, condition for interference. 3 markia question भितर गोटे अच्छी condition of interference. Interference पाई condition कौन? Number 1, the sources should be situated close to each other. जो sources अछंती light source दीटा से माने close to each other हेतिबा दरकार. Number 2 point कौन? They should be coherent. Coherent माने there will be no difference in frequency and wavelength. तांकर frequency आ wavelength कौन होबो ना समान थिबो. Number 3 कौन? ना their amplitude should be nearly equal. तांकर amplitude टा nearly equal हेथिबो. Okay. Then what is number 4? Number 4 is they emit continuously. They emit continuously. से माने continuously emit करुथिबे. They emit continuously. Okay. So these are the condition for interference. So wave optics and optics रे तमरो एति question आउरी बहुत रही जाउची, but जो गुडा most probable conceptual question, only those concepts I am discussing over here. Okay. So you have to understand it clearly. Your optics and wave optics is covered. If I go on to the next part, that is equal to your electromagnetic induction, and you can say electromagnetic theory, सेठी भी किछि questions रही जाउछि, selective questions, and magnetic element of earth. तो सेटा को भी मैं discuss आज कर दउछि. Otherwise we will put on to the next class. So what should we move on today, or we will do it in the next class? Okay. So we'll go on to the next chapter, that is electromagnetic induction, EMI. In electromagnetic induction, we have a very common question, that is तीनटा फॉर्मेट रे चारिटा फॉर्मेट रे से गोटे क्वेश्चन को बुले बुले पचारुची. प्रथम क्वेश्चन कहूची राइट डाउन लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. केवल एतिकी दउची. तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन कहला माने मोर एथि दुईटा लॉ आसुची. कोन? गोटे होची लेंजेस लॉ, आ गोटे होची फाराडेज लॉ. गोटे हला लेंजेस लॉ, आ गोटे होची फाराडेज लॉ. तो व्हाट इज लेंजेस लॉ? ना लेंजेस लॉ कहूची the magnetic flux produces in a closed circuit opposes the cause of its production. माने आमे जानिछु इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हबो. तो मैग्नेटिक फ्लक्स ता सबु बेले जो करंट अप्लाई करा हेची तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे थिबो, ताको कहूछु आमे लेंजेस लॉ. देन कम्स फाराडेज लॉ. फाराडेज लॉ कोन कहूची ना फाराडेज लॉ कहूची E is equal to d phi by dt. E is equal to d phi by dt. But एठी बेले बेले क्वेश्चन पचारि दोची व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस कहला माने मैक्सिमम पिला कंफ्यूज हे जाउछो लेखुनो. सिग्निफिकेंस रो माने हला लेंजेस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स. लेंजेस लॉ कोन करची डायरेक्शन दोची, सिग्निफिकेंस एया. एंड फाराडेज लॉ गिव द मैग्नीट्यूड. Faraday's law gives the magnitude of the magnetic flux. This is the significance. Significance रे माने what it signifies, तार exactly कौन imply करूची. So it implies that Lenz law gives the direction and Faraday's law give the magnitude. आउ गोटे फॉर्मेट क्वेश्चन ने पचारुची सेम Faraday's law रे write down the mathematical form. This is the mathematical form, E equal to minus d phi by dt. It is more in the given. Okay. Another question, यदि आमे जिबा एपटे आ गोटे क्वेश्चन अछि स्टेट दैट योर Lenz's law is based on the principle of conservation of energy. एटा को एक्सप्लेन करो. एठी कोन हबो एग्जैक्टली
सपोज करो दिस इज ए सर्किट प्लस माइनस ए जगह तुम करंट फ्लो होची कही कौन ना एक्सप्लेन करो दैट लेंजेस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओके तो जब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जीवा सपोज करो गोटे मु बार मैग्नेट नेली दिस इज माय नॉर्थ पोल दिस इज माय साउथ पोल इटी कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होची तो आमर लेंजेस लॉ कौन कहूची ना whenever a flux is there okay it opposes the cause it produces जदि मु नॉर्थ पोल को आ पाखु को नेबी एठी भी नॉर्थ पोल डेवलप हबो so that I have to do a bit extra work to move close to the circuit माने मु जदि मैग्नेट टाको पाख को पुश करिवि ताहले मते एक्स्ट्रा फोर्स दबा को पड़िबो कारण एठी नॉर्थ पोल थिला बळे एठी भी से नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करिवो एंड हमको एक्स्ट्रा वर्क करबा को पड़िबो इन ऑर्डर टू रिपेल द मैग्नेट टू द क्लोज वन जदि मु पहुंचे देली जेतबळे मु अट्रैक्शन करिवि पुणी बाहर करिवि ये कोन करिवो संगे संगे ए जगह तमर पुणी साउथ पोल डेवलप हे जिवो ए जगह साउथ पोल डेवलप हे जिवो तो मते अट्रैक्शन कला बळे भी टिके एक्स्ट्रा अमाउंट रो वर्क डन करबा को पड़िबो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जेतबळे हो मोर नेट वर्क डन इज इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बट आमे अज्यूम करिबा सपोज करो एठी नॉर्थ पोल नेला बळे एठी मोर साउथ पोल हेची तो मते बेसी किछि करिया को पड़िबोनी जस्ट अल्प फोर्स प्रेस कले ऑटोमेटिकली आ भीतर को चलिबो एंड कंटीन्यूअसली ता भीतर मूव करिवो जोटा को आम लैंग्वेज रे आमे कहूछु परपेचुअल मोशन व्हिच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल एमती केबे हबो नाही जे तमे थरे मात्र एनर्जी प्रोड्यूस कर दबो एंड से कंटीन्यूअसली विदाउट सप्लाई चलीथिबो दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सो Lenge's law based on the principle of conservation okay so next we'll move on to one other most important question जोटा एससी रे तमर क्वेश्चन बारंबार पचरा होची कोन why transformer works on AC but did not work on DC एटा गोटे बहुत कॉमन क्वेश्चन पचरा होचे बारंबार 3 मार्क का क्वेश्चन तमर आसीबो एटा 3 मार्क क्वेश्चन सो द क्वेश्चन इज एठी स्टार्टिंग कोठू हबो ना ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर मोर काम करूची एठी म्यूचुअल इंडक्शन ऊपरे म्यूचुअल इंडक्शन transformer works on the principle of mutual induction and mutual induction केतबळे possible हबो whenever there is a variation of magnitude and direction of the current जदि मोर current रे continuously variation रहुची then only this mutual induction comes into play but in case of DC there will be no variation of magnitude or direction DC पाई मोर कोनोसी variation रहिबो नाही तो ए जगह रे म्यूचुअल इंडक्शन पॉसिबल हबो नाही since DC have no free variation of magnitude and direction so we can say that it will not possible to have mutual induction in case of DC clear so transformer works on AC but did not work on DC. This is a very common question. And now got a question एथिरे अछि तमर एडी करंट. एडी करंट कोन कहूची? What is एडी करंट? एडी करंट कहूची whenever a conductor cuts the flux suppose करो ए जगह रे तमर रहिची नॉर्थ पोल ए जगह रहिची तमर साउथ पोल यांको भितरे कंटिन्यूअसली एमती मैग्नेटिक फ्लक्स अछि मु एठी गोटे कंडक्टर को इंसर्ट करिवि ओके देन एडी करंट इज डेवलप्ड अराउंड द कंडक्टर ए करंट ए कंडक्टर चारिपटे एडी करंट डेवलप होबो एडी करंट बोली काहे की कहवा जाउची सपोज करो दिस इज द कंडक्टर दिस वन इज द कंडक्टर तो एठी हबो कोन एक्जेक्टली कंडक्टर रे ना इन केस ऑफ कंडक्टर
ये कंडक्टर चारिपटे छोट छोट सर्कल रे तमर करंट माने प्रोड्यूस हेबे सेटा केमिति प्रोड्यूस हबो ना द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर एठी जो फ्री इलेक्ट्रॉन माने प्रेजेंट थिबे से माने छोट छोट सर्कल और एडीज रे बुलिबे सेति पे ताको कहला एडीज करंट हाउ टू रिड्यूस एडी करंट ना एडी करंट लॉस करे ताको रिड्यूस करिया पे हमें कोन करू लैमिनेटेड करू वी लैमिनेटेड द सरफेस आउ कोन करू वी मेक स्लॉट्स एमती तमर शीट अच्छी शीट रे आमे स्लॉट्स करू एमती ओपन कर दो काटी दो सो दैट कोन हबो से एडी करंट ता तमर रिड्यूस हे जिवो so it is one of the more important question that is laminated slots are there so this is all about your AC and two more questions are remain from magnetism of matter तमर ओटा magnetism अच्छी तो magnetism रे तमर दीटा क्वेश्चन अच्छी कौन ना गोटे क्वेश्चन कहूची difference between diamagnetic and paramagnetic and paramagnetic diamagnetic and paramagnetic substance ro difference okay so difference between diamagnetic paramagnetic and one more important question here we have is that what is the we can say that how they are related earth element magnetic element of the earth just a minute I'm just explaining it right now diamagnetic and paramagnetic substances okay in case of diamagnetic substance they repelled the magnets they repelled the magnets in case of paramagnetic substance they attract weakly repel exactly weakly attract and this weakly attracted diamagnetic hela weakly repel kariba substance ku paramagnetic hela weakly attract kariba substance ku au kon achi intensity of magnetization m is negative here we have m is positive intensity of magnetization susceptibility is negative susceptibility is also negative and here we have susceptibility is positive okay एटी आ गोटे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा को आमे कहूछु हम लैंग्वेज रे क्यूरीज लॉ कौन कहूची ना क्यूरीज लॉ स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m is directly proportional to the h magnetic field intensity and inversely proportional to the absolute temperature this is known as Curie's law or paramagnetism इटा कहते Curie's law for paramagnetism m proportional to h by t that is intensity of magnetization is directly proportional to h and inversely proportional to temperature and it is only for paramagnetic substances Curie's law last but the most important question is जोटा 3 मार्क तमर आसुची magnetic element of earth इटा गोटे very important question magnetic element of earth magnetic element of earth कौन एटा बुझे पे चेष्टा करियो what is magnetic element of earth just I am drawing the diagram you just make a clarity this angle is delta this angle is theta vertical horizontal
तो मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ कहला माने मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ कहले एथिरे मोर तीनटा पार्ट अछि कोन गोटे होउची मोर जोटा को मु कहूची कोन डिक्लिनेशन आई कॉल इट डिक्लिनेशन और थीटा नंबर 2 inclination which is termed as delta and number 3 is horizontal intensity horizontal intensity horizontal intensity. So what is declination? Definition of declination is that आमे जानिचु suppose करो this is my earth, this is north, this is south, east and west. तो जदि मोर अर्थ रो नॉर्थ पोल साउथ पोल टा एमती अलाइन करूची मो हाथ रे जदि गोटे फिजिकल मैग्नेट अछि मु जदि याकू आ ऊपर प्लेस करिवि ये केबे भी आ ऊपर अलाइन हबो नाही टिके एंगल हे कि रहइबो ए एंगल टा हैला तमरो कहंती कोन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. और जदि हमें डेफिनेशन डायग्राम रे देखिबा डायग्राम इज वेरी इंपोर्टेंट एंगल बिटवीन योर मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन. दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन माने आमर ओरिजिनल मैग्नेट रो नॉर्थ पोल आउ साउथ पोल एंड इट इज द अर्थ्स ज्योग्राफिक मेरिडियन. तो ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन भितरे जो एंगल टा हबो से एंगल टा होची एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वी कॉल इट थीटा. नेक्स्ट इंक्लिनेशन और डेल्टा बोली हमें जो जिंस कहूचु इट इज द एंगल बिटवीन the net resultant of magnetic field and the horizontal component of the earth's magnetic field. We call it as inclination or delta. तो जदि एटा मोर नेट रिजल्टेंट आर हुए मोर दीटा कंपोनेंट बाहरिबो गोटे वर्टिकल कंपोनेंट v गोटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h. तो आमे जानिचु वर्टिकल कंपोनेंट टाको h टाको आमे लिखि परिबा cos थीटा फॉर्मेट रे h = r cos डेल्टा r cos del वर्टिकल टाको लिखि परिबा r sin del और आमे जदि नेट रिजल्टेंट बाहर करिबा tan बाहरिबो tan delta = v/h and net resultant r = v square plus h square ro root over. So these are the few important questions of 2 marks 3 marks. मोस्ट ऑफ द जिनस कवर कारण बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड भितर सब गुड़ा क्वेश्चन करी हबनी बट जो गुड़ा मोस्ट प्रोबाबल तार क्वेश्चन आंसर तुमको एठी कर दिया गला. ओके तो आउ जो तुम टॉपिक रहिला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी तो सेटा पई आउ दिने गोटे 2-3 मार्क्स रो क्वेश्चन मु तार करे देबी आउ किछि रिमेनिंग रहितो भी कवर करबी गोटे क्लास रे पॉसिबल हो नाही. तो वन मोर क्लास विल बी देयर based on short questions that is 2-3 marks रो आउ गोटे आर सेकंड पार्ट पुणी आसीबो. तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इथिरे हमें फुल्ली कवर करचे पेपर 2. ओके तो मोस्ट ऑफ द पार्ट रे हमें जेमती कहिचु जे नेक्स्ट पार्ट रे तीनटा चैप्टर हमर मेजर रही गला. गोटे हैला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गोटे हैला कैपेसिटेंस एंड आउ गोटे होची तमर कोन ना करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो से तीनटा पई सेकंड पार्ट आउ किछि क्वेश्चंस जदि पेंडिंग थिबो मु से क्लास रे डिस्कशन कर देबी 2-3 मास. सो वेट फॉर द सेकंड वीडियो. गोटे वीडियो रे पूरा चैप्टर कवर करी हैला नाही. तो फर्स्ट पार्ट रे एठी मोस्ट ऑफ दी हमें ऑलमोस्ट सेकंड पार्ट फुल्ली कवर करिचु एंड फर्स्ट पार्ट रो एसी मैग्नेटिज्म मैटर आउ तमर गोटे जिंस रहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो आउ जो चैप्टर रही गला रिमेनिंग 5 चैप्टर्स तार सेकंड वीडियो रे 2-3 मार्क्स रो क्वेश्चन तुमको डिस्क्राइब कर दिया जिवो. So today for today we are closing it and if you want PDF then exactly we can say that तमे better हबो जे एगुरा एक्चुअली बहुत जिंस ऑलरेडी हमर समृद्धि बैच रे दिया हेची और हमर PCMB जो PYQ सीरीज अछि PYQ सीरीज रो भी तमे डाउनलोड करि परिबो. याको आउ फर्दर PDF करिया पॉसिबल हो नै ड्यू टू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इट इज एब्सोल्युटली फ्री. मु जेम तुम प्रथम कहि PCMB PYQ सीरीज और समृद्धि बैच
both रे सब जिनसर कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल अच्छी इन द पीडीएफ फॉर्मेट यू कैन टेक ओवर दैट विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको पीडीएफ तो पॉसिबल हो ना अवेलेबल तो होने एटा सेठी अच्छी ऑलरेडी तो ताको रिपीट करी किसी लाभ ना यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर ओके तुम डायरेक्ट समृद्धि बैच रे ऑलरेडी कराई ना तुम पीसीएमबी पीवाईक्यू सीरीज अच्छी तुम से डाटा को डाउनलोड कर एवरीथिंग इज प्रेजेंट ऑलरेडी दिखाई बारंबार आउ प्रोवाइड करा हो नहीं you can take it there from okay so thank you all we'll meet in the next class with the remaining chapters